Welcome back. With the monsoon season of Uttar Pradesh's assembly all set to begin tomorrow, the suspense over who is going to succeed party chief of Samajwadi Party, Akhilesh Yadav, as the leader of opposition in the assembly has ended. The party has picked veteran leader Mata Prasad Pandey for the post. Mata Pandey is a Brahmin at 81 years of age. He is one of the senior most leaders of the party. He's been a 7-time MLA who's currently elected from Itwa. He has vast experience. He has served as the UP Assembly Speaker as well as a minister in the state. The decision was taken after a meeting of the MLAs at SP headquarters in Lucknow. The party has announced Kamal Akhtar as Chief Whip of the party and Rakesh Verma as the Deputy Whip. But the position of Leader of Opposition is the one that has garnered the most interest politically. Remember, Akhilesh Yadav has held this position since the beginning of Assembly term in 2022. Akhilesh resigned from his membership of the Assembly to retain Kannauj Lok Sabha seat. Caste and power equations may have played a crucial role in this decision. There were speculations that Shivpal Yadav, 6-time MLA and uncle of Akhilesh Yadav, could have been made the LOP. Other leaders like Indrajit Saroj, Ram Achal Rajbhar, Ram Murthy Verma and Ravidas Mehrotra were also in the contention. The SP was seeking a strong leader with strong oratory skills for the post, and now Mata Prasad Pandey has made the cut. The new LOP of UP Assembly, Mata Prasad Pandey, is here with us. Mata Prasad Pandey जी, आपको UP Assembly का LOP बनाया गया है, किस तरह से जिम्मेदारी को देखते हैं? अब ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और इसी समय तो और जिम्मेदारी बढ़ गई है जब सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हो, बेरोजगारी की समस्या बढ़ती चली जा रही हो, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न हो गई हो, किसानों की समस्या उत्पन्न हो गई हो, विद्युत की समस्या हो, तो बाढ़ से भी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। जो सारी समस्याएं हैं, ये सबको ये एक चुनौती के रूप में समाजवादी पार्टी स्वीकार करके सरकार को घेरे। कल से सत्र शुरू हो रहा है, क्या वहाँ मुद्दे रहेंगे? आपने जैसे बताया बेरोजगारी है, महंगाई है, कि जो बीजेपी के जो अंतरकलह है, क्या इसको भी मुद्दा बना के सदन में उठाएंगे? देखिए, उनके अंतरकलह से हमें क्या लेना देना, उनका अंतरकलह है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे तो बात करते हैं उनके बारे में। Now, UP Deputy Chief Minister Keshav Prasad Maurya posted his congratulatory message for Mata Prasad Pandey, but accused Akhilesh Yadav of betraying the backwards and Dalits in picking Pandey over other candidates. He posted, and I quote, Samajwadi Party's PDA is only a big betrayal now. It's only a slogan, and claiming that he further went on to claim that BJP is going to repeat the victory of 2017 in 2027. तो उनकी पार्टी का मामला किसी को बनावे, उसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है, वो स्वतंत्र हैं। नहीं, लेकिन क्या आपका ये मानना है कि अगर माता प्रसाद पांडे को वो बनाते हैं तो जिस बना दिए कि बनाते हैं? नहीं, अगर जो उनका पीडीए का फॉर्मूला था, क्या वो अब वैसे चलेगा? क्योंकि ब्राह्मण चेहरे को उन्होंने ये जिम्मेदारी दी है। भाई, सबका साथ सबका विकास इधर हो रहा है ना। अच्छा, बीजेपी में जो है लगातार जो है अंतरकलह थी, सपा कह रही है कि ये मुद्दा जो है प्रमुखता से सदन में उठाएंगे, पेपर लीक का मुद्दा था, इसको उठाएंगे। क्या दिक्कत है? सदन इसी नाते अपनी बात रखने के लिए है, तो सदन में लोग अपनी बात रखें, किसी कोई मना कहाँ कर रहा है। Very interesting scenes are all set to play out as the assembly monsoon session begins tomorrow in Uttar Pradesh. Major speculations around a likely political churn, whether or not it is going to happen, or has that been water under the bridge now. We will keep track of all those developments right now. Taking a very quick break. Thank you for watching News Hour Special Edition.